to SPI प्रिपरेशन कोर्स 2024। तो बच्चों, ऑनलाइन जो बच्चे हैं इनके लिए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि कल की जो हमारी टेस्ट हुई थी उसकी आंसर की जो है आपको भेज दी गई है, और उस आंसर की मदद से आपका पेपर जो है आपको चेक करना है और आपके मार्क्स जो है मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है। तो ये बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग इज दैट नोबडी कैन कॉल मी, कोई भी मुझे अभी कॉल नहीं करेगा मेरे मोबाइल पे कॉल करने के लिए, किसी ने भी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अभी लाइव जो स्ट्रीमिंग है इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मेरे मोबाइल से हो रही है। तो अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो जिसकी वजह से ये जो लाइव स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पे इसे प्रॉब्लम आ सकता है, तो मुझे कोई कॉल नहीं करेगा। और ये जो है टेस्ट आपको चेक करना है। तो लिसन टुडेज शेड्यूल, द फर्स्ट पीरियड इज ऑफ अवर मैथ, किशोर सर विल टेक दैट पीरियड। द सेकंड पीरियड एज यूजुअल मैंने इंग्लिश का आपको दिया था, लेकिन हमारे गेस्ट जो है अभी रेडी है, तो इंग्लिश की जगह पे हमारा सेकंड जो है गेस्ट लेक्चर होगा इट नियर अबाउट 40 मिनट्स of our principal sir. Then next class is of our science D power sir. Sorry for interruption. Next is our history period. In afternoon session there will be the math doubt session for offline students, and after that in 2:40 to 3:30 there will be the English lecture by Professor Taide sir, and at the end I will take the class of science। तो ये हो गया हमारा डेली शेड्यूल। कीप ऑन स्टडिंग। और अभी फिर से मैं बताता हूँ, डोंट ट्राई टू कॉल मी। तो शुरू करते हैं आज का क्लास हमारे हिंगमेरे सर के साथ। थैंक यू वेरी मच पंकज सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मॉर्निंग सर। टुडे वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द SPI entrance examination, that is probability. Very simple topic it is, but it is simple only when you know the basic terms that are used in case of the probability. Okay, the probability means the possibility. Many times in our daily life we declare the certainty of any event. For example, if we have face any examination, then we say that possibly or maybe I will get score 70%. How will you give this statement? The statement will be given by you only when you solve the paper good. Otherwise you will not be able to give this statement. Means surrounding environment should be supporting for giving any statement. For example, you give the statement possibly it will rain today. When you will give this statement when there is a dense cloud in the sky, then only you will be able to give this statement that possibly there will be rain today. Another statement we may say that surely I will get the first class. Surely I will get first class. When you will give this statement when you face the exam good. There is a possibility of no possibility of polio infection if a child is given polio vaccination in time. Okay, means we don't get a single child who is affected by polio if the child is given polio vaccination in time. Means these are the possible statements. Possible statements, or we may say that it is impossible for Pakistan to beat India. This is also a possibility. This is also a possibility. When we give this this type of statement, when we feel that our Indian team is very strong, all the players are performing well, in that case only we'll give this type of statement. Okay, all these are the examples of probability. These are the examples of probability. Few examples we see also when there is a cricket match, football match or hockey, kho-kho match. The umpire toss the coin.
In that case, umpire doesn't know or anyone don't know what is going to be turn up. When we toss a coin, we don't know exactly either head or will tail turn up. कोई भी एक तो turn up होगा, लेकिन exactly what is going to turn up, we don't know. This is an example of probability while tossing the coin. We also play the various games. Ludo, in that case also we have this type of dice. Okay, when we throw this dice, we know either 1, 2, 3, 4, 5 or 6 will turn up, but exactly what is going to turn up, we don't know. These are the examples of probability, and tossing a coin is a random experiment. Now we see the basic terms used in the probability. The very first term is the random experiment. The experiment you carry out in the lab, science lab, in which you know the exact result, what is going to come. But in case of probability, you know only the possible results. So the random experiment is what? An experiment in which all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty. हम अगर coin toss करेंगे तो either head or tail will turn up. We know possible results. We know either head is going to turn up or tail is going to turn up, but exactly or certainly we can't be able to declare that only head will turn up or tail will turn up. Such type of experiments are called as random experiment. When we throw a dice, this is a dice or it is also called as the cube. When we throw it, we know the score will be 1 or 2 or 3, 4 or 5 or 6. Possible results we know very well, but exactly what is going to become or what score is going to be appear on the upper face, we don't know. Such type of experiment is also called as the random experiment. Clear about the random experiment? This is the very first and basic term in the probability, random experiment. Then the set of all the possible outcomes of an random experiment are denoted by the sample space. Sample space is simply the next term in the probability is the sample space. The first is the random experiment. The second is the sample space. Sample space is denoted by S. Sample space is denoted by capital S. Sample space is simply the set of all the possible outcomes of random experiment. When we toss a coin, what are the possible outcomes? Head and tail. Head and tail will be the possible outcomes. If we write these possible outcomes in curly bracket, S is equal to in curly bracket H comma T. It is the sample space. It is the sample space when one coin is tossed. When one coin is tossed. When we throw a dice or when we throw a cube, the sample space will be S is equal to in curly bracket 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the sample space when 3 is repeated here. No element will be repeated while writing the sets. That is why in the last lecture we have seen the topic set. It is the set of all the possible outcomes of an random experiment. Now what will be the sample space when two coins are tossed simultaneously? When we toss two coins simultaneously, sample space will be both will be H. Both coin will turn up H, or first will turn up head, second will turn tail, or first will turn tail, second will turn H.
or both will turn tail. Means sample space when two coins are tossed simultaneously contains four elements. Contains four elements HH, HT, TH, TT, which you have already seen. Okay. The next term is event. The next term used in probability is the event. Event is simply the set of favorable outcomes. Suppose we have tossed a coin H and we want head to be turned up. Head to be turned up. Then what is the possibility of getting head? Only one chance is there for getting a head. Such type of favorable outcomes. Favorable means what? The outcomes which satisfies the given condition. The outcomes which satisfies the given condition. For example, we thrown a dice and we want a outcome which is a prime number. Outcome which is a prime number. Then the outcome will be 2, 3, 5. The elements or the sample points from the sample space which satisfies our condition. What is our condition? That the score on the dice will be a prime number, or the score is a prime number. Then the prime numbers are 2, 3, 5. So 2, 3, 5 are the sample points that satisfies our condition that the score is a prime number. That is called as the event. Event is what? Simply the set of favorable outcomes. Favorable means which we want. हमें जो चाहिए वो, हमें कौन से चाहिए होते हैं? जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं वो. Here may be another condition that the score on the dice is multiple of 5. Multiple of 5. There is only one sample point in the set which satisfies the given condition that a score is multiple of 5. This is called as the event. Okay. Now we'll see here some examples. There is also one random experiment. Drawing a card from the pack of 52 playing cards. All you know, these are the playing cards. Okay. How many cards are there in the pack of playing cards? 52 playing cards are there, out of which 26 are red and 26 are black. अभी 26 जो रेड होते हैं उनमें भी कौन से होते हैं रेड? डायमंड एंड हार्ट. डायमंड एंड हार्ट. दिस इज द डायमंड कार्ड एंड दिस इज द हार्ट कार्ड. डायमंड एंड हार्ट. उसमें भी डायमंड होते हैं 23 और हार्ट शेप के होते हैं, सॉरी डायमंड होते हैं 13 और हार्ट के भी 13 होते हैं. उसके बाद में ब्लैक कलर जो है, ब्लैक कलर में भी 26 कार्ड होते हैं. उसमें जो है 12 होते हैं स्पेड कार्ड. दिस इज द स्पेड कार्ड. स्पेड ब्लैक में दो टाइप होते हैं, स्पेड एंड क्लब. This is the club card. Okay. This is also a random experiment in which if you are supposed to pick up a card, आपको इसमें से कोई भी एक कार्ड पिकअप करना है. आपको पता है कि which card will come, but exactly which is going to come you don't know. अगर इसको हमने well shuffle कर दिया, if we well shuffle it and you have been asked to pick up any one of the card, then you will know which card is going to come, but exactly which card is going to come you don't know. इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इसे कहते हैं एस कार्ड. You may be asked what is the probability of getting एस कार्ड. तो एस के कितने कार्ड होंगे? उसमें 4 कार्ड होंगे. You might be knowing about this is the jack, then the queen card and
king card. Okay, all these cards you must be knowing, because there may be a question asked on these concepts. Okay, these are the playing cards, and it is also a random experiment. If we shuffle these cards and you have been given a task that draw a card from the pack of 52 playing cards, then it is a random experiment. Okay, so 52 playing cards you must know. Then each outcome has equal chance. That is why the random experiment, the outcomes are equally likely, because each outcome has a equal chance of getting selected. Okay, that is why the outcomes are called as the equally likely outcomes. Okay, अगर ये हम डाइस थ्रो करेंगे तो इसमें भी आपको 1 2 3 4 5 6 जो स्कोर है सभी को सेम चांस है. हमें लगता है कि मेरा स्कोर 6 आना चाहिए, लेकिन आता है कि हमेशा नहीं. हमारा थिंकिंग होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिलना चाहिए, बट each of the score have the equal chance, so the scores are equally likely outcomes. सभी स्कोर जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वली लाइकली होते हैं. अभी हम यहाँ पर कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट और उनके पॉसिबल रिजल्ट्स यहाँ पर लिखेंगे. तो सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है. 1 coin is tossed. When 1 coin is tossed, sample space will be S is equal to H comma T. Number of element in S will be 2. इसमें एलिमेंट कितने? सैंपल पॉइंट्स 2, H T. नाउ सेकंड इज 2 coins are tossed. Coins are tossed simultaneously. कैसे टॉस करने हमें? साइमल्टेनियसली 2 कॉइन हमें टॉस करने. तो इसका जो सैंपल स्पेस यस होगा, इट विल बी एच टी टी एच एच सॉरी एच 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 टी टी एच टी टी. दिस विल बी द sample space when 2 coins are tossed. N of S will be 4. What will be the sample space when 3 coins are tossed simultaneously? 3 coins are tossed simultaneously. The sample space S will be H H H H H T H T H T H H. The 4 elements with maximum 2 heads. Then T T H T H T H T T and T T T. The number of sample points will be 1 2 3 4 5 6 7 8. N of S will be 8 when 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. The fourth random experiment is drawing a card from the pack of cards bearing numbers 1 to 25. Drawing a card from a pack of cards bearing numbers from 1 to 25. We have 25 cards on which the numbers are marked 1 to 25. First card marked by 1, second is 2, 3, 4, 5 up to
25. Therefore the sample space yes will be 1 2 3 4 5 and so on up to 25. Therefore the number of element in the sample space yes will be 25. इसमें 25 कार्ड्स है और हर एक कार्ड पर एक नंबर लिखा गया है। पहले कार्ड पर 1 होगा, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, ऐसे 25 कार्ड्स है और 25 कार्ड पर 1 to 25 नंबर्स लिखे हैं और इसमें से हमें क्या करना है, एक कार्ड पिकअप करना है। ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड्स बियरिंग नंबर 25। अगर आपको एक कार्ड पिकअप करना है तो आपको पता है कि व्हाट नंबर विल बी गोइंग टू कम, नंबर कौन से आ सकते हैं या आपको पता है, बट एग्जैक्टली विच नंबर इज गोइंग टू कम you don't know. So this is also an random experiment. The next random experiment is a dice is thrown. Fifth one, a dice is thrown. Sample space yes will be 1 2 3 4 5 6. Bracket complete. Number of element in the sample space yes is 6. This is the random experiment when a dice is thrown and the sample points will be 1 2 3 4 5 6. Number of sample point n of s is equal to 6. The next experiment is two die are thrown साइमल्टेनियसली। अभी यहाँ पर जैसे 2 कॉइन्स हमने टॉस किए हैं साइमल्टेनियसली, वैसे ही ऐसे 2 डाइस हमें थ्रोन करने हैं। देखो आपका जो एसपीआई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें मोस्टली 2 डाइस का एग्जांपल बहुत बार देखा गया है, जिसमें आपको नंबर के कंसेप्ट पता होने चाहिए। दैट द सम ऑफ द स्कोर, अभी हम देखेंगे उस पर भी। सैंपल स्पेस यस विल बी 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 and so on up to 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. Number of sample point in it, n of s is equal to 36. You must know what are the sample points coming in any random experiment because it is useful for finding the probability. Okay, यहाँ पर अभी क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सम ऑफ द स्कोर्स इज अ प्राइम नंबर, सम ऑफ द स्कोर्स इज अ प्राइम नंबर। अभी ये लिस्ट हमने शॉर्टकट में लिखा है, आपको ये पूरा लिस्ट लिख कर लेना है और जो सैंपल पॉइंट्स यहाँ पर है इट इज द फर्स्ट सैंपल पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे आपके पास कितने सैंपल पॉइंट होंगे 36. देयर विल बी 36 सैंपल पॉइंट्स एंड थ्रू दैट 36 सैंपल पॉइंट यू विल बी गिवन अ इवेंट। अभी इवेंट क्या होगा आपके लिए, द सम ऑफ द स्कोर्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2। अभी मल्टीपल ऑफ 2 अगर कहेंगे तो हमें कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 + 1 2, ये सैंपल पॉइंट हमारे इवेंट में काउंट होगा। 1 + 3 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो ये भी सैंपल पॉइंट हमारे इवेंट का जो सैंपल्स इवेंट का जो सेट होगा उसमें उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। 1 + 4 5 होता है, 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। इस टाइप का आपको इवेंट दिया जाएगा। इवेंट में भी दैट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड, फर्स्ट स्कोर इज ग्रेटर देन सेकंड स्कोर। अभी ऐसे कौन से नंबर हो गए
कि जिसमें फर्स्ट स्कोर ग्रेटर होगा सेकंड स्कोर से 2-1, फर्स्ट स्कोर इज ग्रेटर देन द सेकंड स्कोर। ऐसे सैंपल पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इवेंट इज next sample space is a card is drawn at random. A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards। 52 कार्ड्स। अभी इसका अगर सैंपल स्पेस हमें निकालना है तो वो भी आपको डायरेक्टली एन ऑफ एस हम इसका लिखेंगे, एन ऑफ एस विल बी 52, क्योंकि इसमें हमें पता है कि 26 होते हैं ब्लैक कलर के कार्ड और 26 होते हैं रेड कलर के कार्ड। अभी रेड में भी दो टाइप होंगे, वन इज डायमंड एंड हार्ट, उसमें भी 3 फेस कार्ड होंगे। फेस कार्ड पता है सभी को, किंग, क्वीन एंड जैक। ये जो 3 कार्ड होते हैं इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। इन्हें क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। ऐसे कितने फेस कार्ड होंगे? 12, 3 इन डायमंड, 3 इन हार्ट शेप, 3 इन क्लब एंड 3 इन स्पेड कार्ड। ओके, ऐसे टोटल 12 फेस कार्ड होंगे। आपको इवेंट पूछा जाएगा कि फेस कार्ड का दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, लेट ए बी द गेटिंग अ फेस कार्ड। तो इवेंट जो है वो कैपिटल लेटर ए बी सी डी से डिनोट किया जाता है, एक्सेप्ट यस, क्योंकि यस हमने किसके लिए यूज किया है? सैंपल स्पेस की। अभी ये जो इवेंट होते हैं, अभी इवेंट की तरफ हम यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। इवेंट इज व्हाट? इट इज द सिंपली अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इट इज द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें अगर इवेंट हमने लिया, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग हेड, तो कितने सैंपल पॉइंट आएंगे उसमें? लेट ए बी द इवेंट गेटिंग हेड, एक ही सैंपल पॉइंट आएगा गेटिंग हेड का, क्योंकि एक ही सैंपल पॉइंट है इसमें एच टी में जिसमें हमें हेड मिल रहा है। अभी सेकंड सैंपल पॉइंट सैंपल स्पेस अगर हम कंसीडर करेंगे, उसमें एलिमेंट्स है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अभी हमारा इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। लिसन हियर, द सैंपल स्पेस इज यस एंड गेटिंग माय इवेंट इज गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मिनिमम, उससे ज्यादा भी चलेंगे। उससे ज्यादा रहा तो इंक्लूडेड है, उससे कम नहीं होना चाहिए। 1 हेड से हमें कम होने नहीं चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड के कौन कौन से एलिमेंट हमारे इसमें आएंगे फिर? एच एच, एच टी, टी एच। एटलीस्ट का मीनिंग होता है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एटलीस्ट और एट मोस्ट। एटलीस्ट और एट मोस्ट। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम उतने, उससे ज्यादा चलेंगे। एटलीस्ट, हाँ, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम उतने होने चाहिए। अभी यहां पर हमने, हमारा इवेंट क्या था? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है एच एच इंक्लूड है, एच टी इंक्लूड है, टी एच भी इंक्लूड है, टी टी नहीं है क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम उतने। अभी एट मोस्ट का एक इवेंट रहेगा, गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा उतने, उससे कम या नहीं भी होगे तो चलेगा। अभी हमारा इवेंट क्या है? गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल। गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एट मोस्ट 1 टेल में
एच एच आ जाएगा, इसमें एक भी टेल नहीं है। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले, उससे कम भी रहे तो चलेंगे, नहीं रहे तो भी चलेंगे। तो एच एच वन टेल इसमें नहीं है, चलेगा। एस टी में वन टेल है, टी एच में भी वन टेल है, टी टी में दो टेल है। तो ये एलिमेंट, ये सैंपल पॉइंट हमारे सैंपल स्पेस में, सॉरी हमारे इवेंट के सेट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये दो वर्ड आपको इंपॉर्टेंटली समझने हैं, एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब है मिनिमम, उससे ज्यादा इंक्लूडेड है, और एट द मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम उतने होने चाहिए, उससे कम एक्सेप्टेड है, नहीं है तो भी एक्सेप्टेड है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट एंड एट मोस्ट। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये दोनों मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। अभी इसमें भी हम अगर सैंपल पॉइंट लेंगे, इवेंट लेंगे, थर्ड सैंपल स्पेस इज टॉसिंग 3 कॉइन। टॉसिंग 3 कॉइन साइमल्टेनियसली, द सैंपल स्पेस कंटेन्स 8 एलिमेंट्स। अगर इसमें हमें इवेंट लेना है, अगर हमारा इवेंट होता है कि गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड का सैंपल स्पेस है, इवेंट है, तो फर्स्ट सैंपल पॉइंट विल बी देयर, सेकेंड विल बी देयर, थर्ड विल बी देयर, फोर्थ विल बी देयर। इसमें एटलीस्ट बोला है मैंने, क्या बोला है मैंने? एटलीस्ट मतलब कम से कम दो से ज्यादा चलेगा। एटलीस्ट 2 टेल, कंडीशन क्या है हमारा? एटलीस्ट 2 टेल्स। तो यहाँ पर 3 हेड्स, 2 हेड्स है, एटलीस्ट 2 हेड, तो यहाँ पर 3 हेड है, इंक्लूडेड है हमारे इवेंट में। यहाँ पर भी 2 हेड्स है तो इंक्लूडेड है, यहाँ पर 2 हेड है, इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी 2 हेड्स है, इंक्लूडेड है, यहाँ पर एक ही हेड है, तो ये एलिमेंट हमारे इवेंट में इंक्लूड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद में नेक्स्ट है ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड बियरिंग नंबर्स 1 to 25। इसमें इवेंट क्या हो सकता है? नंबर पर देखो, हमें कोई भी सैंपल स्पेस में नंबर के वेरियस कंसेप्ट पूछे जाएंगे। इवेंट में हमें प्राइम नंबर पूछा जाएगा, गेटिंग अ प्राइम नंबर। दूसरा हमें पूछा जाएगा गेटिंग, लेट सी बी द इवेंट, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी ये जो फोर्थ सैंपल स्पेस है, इसमें आपको पूछा जा सकता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इवेंट असाइन करना पड़ेगा, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग perfect square number. Now which are the perfect square number from 1 to 25? 1, 4, 9, 16, 25. These are the perfect square numbers. Perfect square number आपको पता होने चाहिए, किस नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। पता है ना सभी को? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो ये जो नंबर्स है 1, 4, 9 जो किसी नंबर के स्क्वायर है, उन नंबर्स को कहा जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसे नंबर के रिगार्डिंग, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग आपको अलग अलग कंसेप्ट पूछे जाएंगे इवेंट में, क्योंकि इवेंट क्या होता है? इवेंट इज द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? जो हमारे फेवरेट है वो है क्या? नहीं है। हमारी जो कंडीशन है, वो कंडीशन को सेटिस्फाई जो सैंपल पॉइंट्स रहेंगे, उन्हें हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हो सकता है गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग अ प्राइम नंबर, गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 10, 5, 2, 3, गेटिंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। नंबर के जो कोई कंसेप्ट है, वो सभी कंसेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये जो फेवरेबल आउटकम है या इवेंट है, इसके सैंपल पॉइंट्स लिख पाओगे। ओके, सो अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ इवेंट। इवेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो इवेंट है वो है सर्टन इवेंट। सबसे पहला जो इवेंट का टाइप है वो है सर्टन
इवेंट, सर्टन मीन्स कंफर्म इवेंट है वो। अभी यहाँ पर सैंपल स्पेस है, डाइस इज थ्रोन, इसमें सैंपल पॉइंट है 1 2 3 4 5 6। अभी अगर मैंने इवेंट लिया गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7, अभी यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 7 नंबर मिलेगा क्या? हमें नहीं मिलेगा। और अगर मैं इवेंट लूंगा कि गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा? 2 4 6, मतलब ये इवेंट हो गया सर्टन। ये इवेंट क्या हो गया? सर्टन, जो एग्जैक्टली होने वाला है। इट इज कॉल्ड एज द सर्टन इवेंट। द सेकंड टाइप ऑफ इवेंट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जो होगा ही नहीं। अभी यहाँ पर अगर मैंने सैंपल स्पेस यस लिखा 1 2 3 4 5 6 और मेरा इवेंट है गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7, अभी इसमें 7 के मल्टीपल में कोई नंबर नहीं है, तो हमारा जो इवेंट है वो कैसा इवेंट हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस सैंपल स्पेस में हमें 7 का मल्टीपल स्कोर मिलने नहीं वाला है। क्या मिलेगा? क्योंकि सैंपल पॉइंट ही नहीं है 7 के 6 के आगे, तो 7 का मल्टीपल मिलने का चांस नहीं है। द थर्ड इवेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर 2 इवेंट हमने लिए और 2 इवेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उस 2 इवेंट को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इफ 2 इवेंट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट। अभी यहाँ पर हमने 2 इवेंट अगर लेते हैं हम सैंपल स्पेस यस में, गेटिंग ऑड नंबर एंड गेटिंग इवन नंबर, तो ऑड नंबर्स कौन से रहेंगे? 1 3 5, और इवन नंबर्स कौन से रहेंगे? 2 4 6। दोनों इवेंट में कोई एलिमेंट कॉमन होगा? नहीं होगा। तो ऐसे 2 इवेंट को कहा जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके। दूसरा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसमें कंज्यूम एंटायर सैंपल स्पेस। ये जो इवेंट होता है एग्जॉस्टिव इवेंट, इसमें सभी सैंपल पॉइंट्स कवर होते हैं। अभी यहाँ पर सैंपल स्पेस यस है, अ डाइस इज थ्रोन, और मेरा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ स्कोर लेस देन 7। 7 से लेस देन स्कोर का अगर इवेंट है तो उसमें ये सभी सैंपल पॉइंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, बिकॉज ऑल दीज सैंपल पॉइंट्स आर लेस देन 7। तो ऐसा जो इवेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स। सो दीज आर द 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इवेंट्स. It is all over for today. In the next class, we'll see here some examples on probability. Thank you very much.